मैं हूँ हमेशा की तरह आपका होस्ट और दोस्त जेमी ऑल्टर। और इस लाइव स्ट्रीम को शुरुआत करते हैं इस बात से कि आपको बताता हूँ कि मैं अभी कुछ ही मिनट पहले वापस घर लौटा हूँ दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर दोस्तों, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 309 रन से बेचारे नेदरलैंड्स टीम को हरा दिया है। मतलब हराना में मेरे ख्याल से एक काफी सिंपलिस्टिक और जेंटल टर्म लग रहा है मुझे। दे डिड नॉट जस्ट डिफीट देम, दे स्मैश देम। ये वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ डिफीट है, द बिगेस्ट margin of defeat in any World Cup history dating back to 1975। और जहां अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट की बात करें दोस्तों, इट इज द सेकंड बिगेस्ट डिफीट एवर। यानी कि मतलब इनको धोया नहीं, इनको पिचाड़ा नहीं गया, इनको मतलब कहते हैं ना नॉर्थ में फेंटे लगाए, इनको चमाट चमाट के मारे हैं। एंड अगेन, मोर देन द रिजल्ट, दिस वाज एन अटरली वन साइडेड मैच। जो मैं कह सकता हूं आपसे, बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि वंस अगेन एट द अरुण जेटली स्टेडियम, जहां पर मैं पिछली बार गया था, तो आई हैपन टू वॉच अफगानिस्तान अपसेट द इंग्लैंड क्रिकेट टीम। और आज आई गॉट टू वॉच एट द सेम अरुण जेटली स्टेडियम a record innings from Glenn Maxwell, the fastest one-day century in the history of the World Cup। और आपको बता दूं कि ग्लेन मैक्सवेल से पहले जो डेविड वार्नर ने शतक लगाया, जो स्टीव स्मिथ अच्छे लय में नजर आया, जो मार्नस लाबुशेन अच्छे नजर आ रहे थे, आई वॉच दीज थ्री इनिंग्स, खासकर डेविड वार्नर की इनिंग्स, फ्रॉम माई सीट इन साइड द फिरोज शाह कोटला प्रेस बॉक्स। जब ग्लेन मैक्सवेल एक्चुअली क्रीज पे आए थे तो मैं बाहर गया था, मैं कॉफी पी रहा था, और मैं कुछ जर्नलिस्ट और इयन बिशप, द फॉर्मर वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर टर्न कमेंटेटर, मैं इयन बिशप से बात करता, बहुत साल से मैं जानता हूँ इयन बिशप को। तो हम लोग गप्पे लगा रहे थे। मेरी वाइफ मेहा, जो आप जानते हैं इन शो से, वो भी वहां पे आई थी। मेहा वेंट इनसाइड टू वॉच एंड आई वाज टॉकिंग टू इयन एंड अ कपल अदर अदर जर्नलिस्ट। ऐसे गप्पे लगा रहे थे। फिर थोड़े स्नैक्स आ गए, हम स्नैक्स खा रहे थे। बात बात में दोस्तों, जब ग्लेन मैक्सवेल 10 पे थे, ठीक है, 10, अचानक हम लोग ने देखा बात बात में, देयर इज अ बिग टीवी देयर नेक्स्ट टू द कॉफी मशीन। हम बात कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यार ये मैक्सवेल कितना कितना ओवररेटेड है, क्या ही कर लेगा ये। आपको बता दूं कि हमारे आंखों के सामने अचानक हमने स्कोर देखा, ग्लेन मैक्सवेल वो 60 ऑफ 29 बॉल्स। हमने कहा भाई ये तो कुछ मजा होने वाला है, लेट्स गो बैक इनसाइड। और फिर दोस्तों प्रेस बॉक्स से जो हमने देखा, कहा ग्लेन मैक्सवेल मेरे ख्याल से 60 थे 29 गेंदों में, अचानक उन्होंने हमारे आंखों के सामने 40 गेंदों पे 100 मारे। यानी कि ही वेंट फ्रॉम 60 ऑफ 29 टू 100 इन जस्ट 11-12 डिलीवरीज। हमने खाना छोड़ दिया, हमने कॉफी छोड़ दिया, हमने लैपटॉप बंद किया, हमने कहा लेट्स जस्ट एंजॉय दिस अमेजिंग $1 million मैक्सवेल शो। क्योंकि मैं कह चुका हूं ग्लेन मैक्सवेल मेरे हिसाब से बड़े है ही इनकंसिस्टेंट, लेकिन बहुत ओवररेटेड है। बट फॉर हिम टू कम इन, बेशक प्लेटफॉर्म था, पर अचानक आपको लगा है कि ये स्कोर शायद 350 तक नहीं जाएगा। ही जस्ट स्मैश देम दोस्तों। ऐसी बैटिंग करी कि हम सब मतलब वी वर शॉक कि द मामला एक्चुअली गॉट टू 399। और आपको बता दूं, बहुत 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 कम जर्नलिस्ट होंगे, फैंस होंगे, जो अरुण जेटली स्टेडियम या फिरोज शाह कोट लाइक इट्स कॉल्ड, उस ग्राउंड की तारीफ करेंगे। इट्स गॉट अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग sort of unhospitable to fans, not very good services, वहां की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है। पर दोस्तों इस वर्ल्ड कप से पहला वर्ल्ड कप मैच जो यहाँ दिल्ली में हुआ है, टू दिस फोर्थ मैच, और एक मैच बाकी है नवंबर 6 को, द हॉस्पिटैलिटी दैट द अरुण जेटली स्टेडियम हैज गिवन द डीडीसीए, हैज गिवन द फैंस, द मीडिया, ये काफी काबिल तारीफ है। लेकिन उससे बड़ी बात मेरे लिए, हैविंग बीन टू 4 of the matches so far at the अरुण जेटली स्टेडियम, जिस संख्या में फैंस आए हैं। संडे के दिन तो लोग आए थे इंग्लैंड अफगानिस्तान देखने, but today, a weekday, smack in the middle of the week on a Wednesday, the crowd that turned up on a hot afternoon at the Kotla to watch this match between Australia and Netherlands, ये काबिले तारीफ बात है। और मैं बहुत खुश हूं कि दिल्ली जैसे स्टेडियम पर इतने लोग आए हैं। एंड लेट्स होप कि अदर स्टेडियम्स also get these kind of good crowds for a non-India match, क्योंकि जब इंडिया खेलती है हाउसफुल है। टुडे आई वाज डूइंग लाइव, आप देख सकते हैं इसी इसी चैनल पर जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तो इतने जैमर्स लगे थे कि आई हैड टू चेंज माय लोकेशन 6 टाइम्स। आई हैड टू गो फ्रॉम गेट नंबर 1 टू गेट नंबर 13 ऑलमोस्ट। तो ये मैं समझ सकता हूँ इंडिया के मैच पर, लेकिन फॉर द सिग्नल टू बी जैम, फॉर फैंस टू कीप कमिंग इन, ऑस्ट्रेलियन फैंस आ रहे थे, डच फैंस आ रहे थे, इंडियन फैंस आ रहे थे, एंड टू सी दैट मेनी पीपल filing past me as I was doing my 4 live shows
from outside the Arun Jaitley Stadium today. मुझे personally खुशी हुई. हाँ, मैच वन साइडेड था, but to watch a record win and सबसे बड़ी बात, to watch Glenn Maxwell score 100 in 40 balls, जो आवाजें गूंज रही थी, RCB, RCB, the Delhi crowd was chanting RCB for Maxwell. ये है ग्लेन मैक्सवेल की फैन फॉलोइंग यहाँ इंडिया में. And once again, very happy to be at the Arun Jaitley Stadium to watch another. Well, this wasn't a big result in terms of, as I said, ऑस्ट्रेलिया काफी आसानी से इस टीम को हरा देगी. But to watch Glenn Maxwell scoring the fastest World Cup 100, मैं तो बहुत खुश हूँ. I can say I was there once again. Overall, one-sided match, but Glenn Maxwell की वो पारी देखकर मुझे frankly बहुत बहुत खुशी हुई. It was against a weaker team, yes. But when you play those shots, बार, switch hit मार के थर्ड मैन के ऊपर छक्के लगाना बड़ी बड़ी बात है. So well done, Glenn Maxwell. और जैसे कि मैंने कहा था, Australia will pick up steam again, and now once again alongside India, they're looking to me like one of the favorites for this World Cup. चलिए, आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं. Let's take some comments. Welcome, sir, says Monu Chauhan. Welcome. Big show is back, says CFC Blue. Victor Mitra, that's a new name. Now that Australia is back, अब मैच जमेगा. It was being 2-1 set with India all the way. बिल्कुल, अब सोचिए, सेमीफाइनल वानखेड़े इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही होगा दोस्तों. लिख के लीजिए मुझसे. और उस दिन जो ऑस्ट्रेलिया चढ़ के आएगी मैदान पर, मुझे हल्का सा खतरा लग रहा है. But that said, India is still the best team in this World Cup. Sir, looks like Australia will finish at 3. New Zealand may finish at number 4. I think it's going to be Wankhede Stadium. November 14th is going to be India versus Australia. What's the reason for installing Jammer? Just to block people from doing too much hanky-panky over the net. ऐसा ज़माना आ गया. Thanks to Pakistan, they are back now. Every team will be brave. Not just thanks to Pakistan. Adam Zampa, मैंने कहा था, आज के शो में मैंने कहा था, Adam Zampa, जो पहले दो मैच में पिटे ऑफ लग रहे थे, just not taking wickets. He was the bowler alongside Kuldeep Yadav, जो मैं इसी चैनल पर मैंने वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि ये दोनों सबसे सफल बॉलर्स होंगे. And what is Adam Zampa done? लगातार 3 मैच में 4, श्रीलंका के सामने 4, पाकिस्तान के सामने 4 और अब नीदरलैंड के सामने 4. He is the biggest spin bowling threat to opposing team because he's Adam Zampa. Shashank पूछ रहे, wouldn't you like to see India chasing a high total against South Africa? What's the update? Pandya is out for 2 matches. He's not playing the next 2 matches. बल्कि मेरा गट फीलिंग है कि शायद सेमीफाइनल से पहले हार्दिक पांड्या नहीं देखने को मिलेंगे. बीसीसीआई ने बोल दिया कि अगले 2 मैच तक वो नहीं खेलेंगे. But I want to say he's not going to be fit enough for 5th November against South Africa at Eden Gardens. And given the nature of him, would they want to risk him by bringing him back? I don't know. We might be looking at a World Cup without Hardik Pandya, which could end up costing India the World Cup. But that's the topic for another day. Let's talk about today's match. It was an unbearable watch, says, well, Sagar, I agree. The second half was painful. Needs the group format back where one upset at least takes the stakes of the next match way up. I agree with you. I agree. Valueless innings. Netherlands team में सेमीप्रोफेशनल कोई बिल्कुल वो तो है भाई, हम सब जानते हैं. लेकिन इसी सेमी प्रोफेशनल टीम ने जहां पे लोग उबर ड्राइवर बन रहे हैं, इस टीम ने साउथ अफ्रीका को पिछले साल के वर्ल्ड कप में हराया और इस साल दोबारा साउथ अफ्रीका को हराया. तो अगर आप साउथ अफ्रीका को हरा सकते हो लगातार वर्ल्ड कप्स में, स्लाइटली तो वैल्यू होगा उनके परफॉर्मेंस में. बट अगेन ऑन दिस फ्लैट ट्रैक, आई सेड इन अ प्रीव्यू शो, 400 बनेंगे, 400 से 1 रन कम बने. बट इट्स गुड टू सी फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, कि इतने सारे फैन जो आए थे, तकरीबन 15-20 हजार लोग, उनको ग्लेन मैक्सवेल ने अपना पैसा वसूल दे दिया. आज ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स को हरा के महान बन गई है. महान भाई, महान टीम तो है वो, 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है. लाइक आई सेड, they are going to be the second favorites for me after India. Don't you think round robin should be among top 6? Bottom 4 teams are getting beaten by. बिल्कुल, I've been saying this for the last since the World Cup started, my friend. आप अपने आप को वर्ल्ड कप, विश्व कप खिलाते हो. साला 10 टीम तो खेल रहे हैं और 10 में से 5 तो क्या कहूं, इतनी अच्छी टीम्स नहीं है. So cricket, the bilateral game needs to understand कि आप 2 महीने के टूर्नामेंट इस समय आज के दिन आप नहीं कर सकते हो जब 10 में से 5 टीम्स ज्यादा मैचेस नहीं जीत सकते हैं. श्रीलंका, the worst of the top teams. Pakistan, the worst bowling. England, one of the worst teams. Bangladesh, one of the worst teams. चलिए, अफगानिस्तान ने एक मैच में इंग्लैंड को हराया.
एक में पाकिस्तान को हराया, but these were upsets, these were not predicted wins. नेदरलैंड्स ने इनको हराया, कौन सोच सकता है? 10 टीम्स में से इंग्लैंड खराब, पाकिस्तान खराब, नेदरलैंड्स अनफॉर्चुनेटली नॉट अ टॉप टीम, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, क्या बचे आपके? इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, 4 teams, and like I said, the fifth team could be anyone. जब आप एक 10 टीम टूर्नामेंट को आप वर्ल्ड कप कहते हो और उन 10 में से 5 टीम्स अच्छी हैं और 5 खराब, ये टूर्नामेंट ही मजाक है भाई. सो आई गेट इट. I don't see much of a future for ODIs and the World Cup. A player like Mahmudullah's caliber plays at 6, 7 for Bangladesh. They have wasted so many talents. Like I said, Swapnil, have you seen a team make so many chopping and changes as compared to Bangladesh? नहीं यार, मैं उनको 90 से देख रहा हूँ, एशिया कप के जमाने से देख रहा हूँ, बहुत बहुत chopping and changes करते हैं ये लोग. Which team would India like to face in semi-final? Not Australia. And I'm telling you, India, हार्दिक पांड्या अगर वर्ल्ड कप से नहीं से अभी से बाहर हो जाएंगे, इस टीम को गड़बड़ लग रही होगी अगर ऑस्ट्रेलिया. कैन यू इमेजिन द ऑस्ट्रेलिया दैट वुड टर्न अप अगेंस्ट इंडिया इन अ सेमीफाइनल? भैया, कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया नपको. ऋषभ सिंह इज गिवन 2 apples and a wine. भैया आप वाइन पी रहे हो, बड़ी बड़ी बात है. Your thoughts on 14 team 2028 World Cup, 2027 I think you mean, because that's 4 years. Look, like I said many times, आईसीसी चाहती है कि ज्यादा टीम्स हो, लेकिन वही होगा ना, अगर टीम्स कंपेटिटिव नहीं है और खाली स्टेडियम्स होंगे साउथ अफ्रीका में, it's going to look bad. But I get it, you need more teams competing, but we all know that of those extra 4 teams, कौन क्या उखाड़ेगा? कुछ नहीं. Akshat, if Australia, I just said Australia is the last team. This Australian team, जो बहुत लोग ने इनको राइट ऑफ किया, ये तो मेरे लिए टॉप 4 टीम थी. जब वो हारी साउथ अफ्रीका से, जब वो हारी इंडिया से, इसी शो पे मैंने कहा भाई, इंग्लैंड भले बाहर हो जाए, ये ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसे उठ के वापस आएगी. और अब देखिए, they've won 3 in a row. Yes, they've come over Sri Lanka, the worst bowling attack, Pakistan, the worst team, and Netherlands. But the confidence they've got from Warner scoring hundreds, from Smith and Labuschagne scoring, some runs, from Maxwell with this record 40 ball 100, and Adam Zampa, excuse me, coming back with 12 wickets in 3 matches. This team is just, by the time this team meets India in the first semi-final at the Wankhede, they'll be so charged up. The fuel on which they run when they've won 5 World Cups, it's going to kick in, and I'm really worried now for that semi-final between India and Australia on November 14th at the Wankhede Stadium. But yeah, like I said, quite a spectacle to watch. Glenn Maxwell मेरे हिसाब से बहुत ही inconsistent और overrated player है वो, लेकिन जब वो ऐसे कुटाई करते हैं किसी टीम की, मुझे भैया देखने में एज ए न्यूट्रल, मैंने कहा भाई फैंस, अगर आप आवाज सुनते जब ग्लेन मैक्सवेल का 100 हुआ, भाई फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की आवाज जो गूंज रही थी, you would have thought this was an IPL match or an India match. For a match, an utterly inconsequential one-sided match like this, जहां Indian fans के लिए कुछ नहीं है, they got पैसा वसूल from watching Maxwell. Outstanding fun, I would say. BCCI might try to not tell the creators for the pre-match to make spin-friendly wickets till Pandya recovers. नहीं भैया, आपको लखनऊ में स्पिनिंग विकेट मिलेगा, और सबसे स्लोएस्ट विकेट इस वर्ल्ड कप का अब तक हमने देखा नहीं, ईडन गार्डन्स. It's a big ground. Spinners का योगदान है. They're going to slow this track down so much because the faster they bowl to South Africa, the faster the ball is going to go out. अश्विन का योगदान 4 मैच के बाद वो दिखेंगे. अश्विन का योगदान मेरे हिसाब से वो लखनऊ खेलेंगे, और कहीं ना कहीं गट फीलिंग है कि वो कोलकाता मैच भी खेलेंगे. Afghanistan can definitely beat Netherlands and Sri Lanka. I agree. They should, and can beat one of. Again, I don't think they're going to beat South Africa, and I don't think they're going to beat Australia. They will end up, like I said for the last 3 live streams, whenever we've talked about Afghanistan, Afghanistan will end up on 8 points, not enough to get inside the semifinals, but what a statement. An Afghanistan team which very few people would give a chance. If they can end up with 4 wins, 8 points, they'll have a lot to be proud of. But look, unless South Africa choke, which they're capable of, but बंदे का गट फीलिंग है कि अब साउथ अफ्रीका ने वो चोक अपने सिस्टम से निकाल दिया, और अब पहली बार कहूंगा मैं इस लाइव स्ट्रीम पर, आई सी साउथ अफ्रीका, पहली बार ये एडमिट कर रहा हूं, एज अ सॉलिड सेमीफाइनल टीम.
Yes, madness, Glenn. India will defeat New Zealand, but I don't think the matchup के हिसाब से I don't think their draw is going to be against Australia. That's my gut feeling. Bowling lineup of India and SA, who has the upper hand, Jay Bhai? I still think India's got the better bowling attack. Mohammad Shami coming off the bench, getting 5 wickets. Bumrah's been outstanding. I think by the time it'll be India's third match, 29 को England or 2 तारीख को Wankhede, Sri Lanka. I'll be at that match. By the time India plays South Africa on the 5th of November, I'm pretty sure Mohammad Siraj will not be playing anymore. I think the time has come now. They're going to have हार्दिक पांड्या नहीं है तो आपको 5 बॉलर खिलाने पड़ेंगे. They won't take the risk of dropping a batsman. I think they're going to have to get rid of Siraj and play Shami. And something I'm just getting a feeling that India, like you mentioned, someone commented about India will Sagar said India will try not to tell the creators. I think it's going to be ult. I think they're going to get a very slow and dry track on the 5th of November, Eden Gardens, just so that India can play one more spinner and put South Africa in a spin. Halanki, Heinrich Klaassen, beहतरीन. The best player of spin for a non-Asian team in this World Cup is Heinrich Klaassen. पता नहीं मुझे गट फीलिंग है कि बीसीसीआई थोड़ा स्लो ट्रैक देगी. अजय भाई ये क्या बकवास वर्ल्ड कप है मोस्टली वन साइडेड मैचेस. आकाश पंचाल आप कहाँ थे इतने दिनों से. मैं तो कह रहा हूँ अपसेट में मजा है. इंडियन टीम की 5-0 रिकॉर्ड से खुशी मिलती है लेकिन भैया 25 मैच हो चुके हैं 24 मैच हो चुके हैं. कहाँ है वो करीबी मामला. आई बीन सेइंग इट एवरी डे. आई डू अ लाइव स्ट्रीम. आई से आई हैड फन. I was at the Arun Jaitley Stadium when Afghanistan beat England. पर भैया वो करीबी मामला कब आएगा. एक भी मैच, ये 24वां मैच था मेरे ख्याल से, एक भी मैच क्लोज नहीं रहा. Sushant is saying, Jamie, thank you, my friend. Oz is the team to beat in the World Cup now. Not just now. I'm not going to change my tune. I called out Australia as the second favorite team for me after India. And even when they were down, when they were beaten, people were writing them off. I said, no, ये टीम दोबारा आएगी और ये टीम सेमीफाइनल में जाएगी ही जाएगी. And like I said, my gut feeling is India will face Australia in the first semi-final because Pakistan cannot make it. तो यानी कि semi-final मुंबई में होगा. I'm getting slightly worried about India facing Australia. I don't know, पता नहीं. But let's stay positive. Reza Hendricks, the most talented and capable player to not feature regularly. He would have definitely been in the 11 with any team, but batting is stacked. Batting is outstanding. परसों सब कुछ डिसाइड हो जाएगा. चलिए परसों क्या है. परसों कौन सा मैच है यार मैं भूल गया. मुझे बताना एक बार. India, Australia, NZ, SA, probable semi-finals. I agree with you. Can Park lose next 4 matches against SA, England, New Zealand, and Bangladesh? The way they're playing, my friend, PS, it's actually a possibility. I think probably they'll win 2 of 4, and they'll end up at the number 6th position, which I predicted they would before the World Cup. Can Ashwin play in Wankhede? नहीं वानखड़े में कोई फायदा नहीं है, but हाँ लखनऊ और ईडन गार्डन्स I think अश्विन आ जाएंगे. रोहित विराट तो रेस्ट होगा. नहीं 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 नहीं. वर्ल्ड कप में कोई रेस्ट नहीं लेता. नहीं भैया. रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के आपस में चल रहा है कि भैया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहेगा. ये लोग रेस्ट नहीं लेंगे भाई वर्ल्ड कप में. नहीं. I'd be shocked if they took a rest. अभी नहीं. वर्ल्ड कप में नहीं. SA versus NZ will be a thriller. You know, I've been waiting. मैं 7-8 मैच को इसी लाइव स्ट्रीम पर मैच के डे मैंने कहा आ जाएगा वो थ्रिलर, आ जाएगा वो हॉट स्टॉपर. कहाँ है भैया. तो yes, I agree in theory, but right now I just like who was it? Sagar was saying every match has been one-sided. कहाँ है वो मुकाबला भैया. Definitely want India to win it, but if not, who would you want to win the World Cup and why? I would want New Zealand. The last 2 World Cups, they've ended up runners up. I will always support New Zealand after India. Jamie, I'm very impressed by this Afghanistan team, says Dia. Maybe we'll see them in the same final 2027 given ODI survives, which Crick Pundit adamantly want. Again, Afghanistan have come a long way. I think they're going to win 2 of 4 and they'll end up on 8 points, like I said, which would be a massive achievement for a team that no one gave a chance. So they're making all the right choices. They just need 2 middle order batsmen and they'll become a very good one-day team. 5 different man of the match for India. Bowlers. My friend, मैं कह चुका हूं. अगर इंडिया अब तक 5-0 है, it's not because of Virat Kohli, Rohit Sharma, KL Rahul chasing. It's because the bowlers. Bowlers ने आपको 5 मैच में achievable targets set किए हैं. 200, 204, 203, 256, 270.
India is chasing five in a row only because of the bowlers. It is the best. बहुत बार कह चुका हूं. It's the best bowling attack in this World Cup. इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल हो तो ज्यादा मजा आएगा और इंडिया के चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एज अगेंस्ट प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया माय फ्रेंड्स जय भाई आप स्टेडियम में कैसे बैठ रहे हो मैं आज फिर से मैच ज्यादा मैं तो प्रेस बॉक्स में बैठता हूँ ना तो अगर आपको पता है प्रेस बॉक्स इज जस्ट सामने गौतम गंभीर स्टैंड है विराट कोहली स्टैंड के जस्ट बगल में इज द प्रेस बॉक्स तो हम तो प्रेस बॉक्स में बैठते हैं बहुत स्नैक्स खाए बहुत कप कॉफी पिया भाई हम तो एंजॉय करते हैं अंदर बैठ के एनीवेज आई हैड अ लॉन्ग डे आई बीन आउट सिंस 8 इन द मॉर्निंग बच्चे का पीटीएम था 2 घंटे का फिर 5 लाइव शोज किए स्टेडियम गया and just come back so I'm going to get some dinner I've literally come home and I've just gone straight to the live stream क्योंकि आज ना आपने देखा होगा दोपहर के शो पे इतने जैमर्स लगे थे कि my live stream preview show was interrupted 4 times I said no point getting from Delhi back to Noida is a pain at that time I said let me go home let me sit down wash my face and I'll recap my experience watching Glenn Maxwell for you from the comfort of my home so I'm home now thank you for watching I'm doing India's match in Wankhede against New Zealand. I'm doing the final Kotla match, and then most likely Diwali ke din I'll be in Bangalore doing India Netherlands. But क्योंकि दिवाली के दिन है शायद मैं ना जाऊंगा. That rounds out my remaining 3 league stage matches, and then I'm doing the first semi and the final. So another 5-6 matches मैं आपके लिए live coverage दूंगा ground से. It's been really fun so far. I've seen some good matches. चलो आज थोड़ा one-sided था, but I got to watch Glenn Maxwell slam that 40. And I'll never forget the sound the Kotla fans made as he was nearing his 100. Dosto, thank you. I'm going to get some dinner, get some sleep. Love you all. Thank you for watching. Take care. Good night, Jane.